we are discussing a question from units and dimensions. So let us take this question. So in this question, what has been asked is, according to Newton's, the viscous force acting between liquid layers of area capital A and velocity gradient delta V by delta Z is given by this force is equal to minus eta A delta V by delta Z. Alright, where eta is a constant which is called coefficient of viscosity. Then the dimensional formula for this eta symbol, coefficient of viscosity, is. So try to have a guess कौन सा सही होना चाहिए. ओके, कैसे करेंगे? ट्राई टू मेक ए गेस. A, B, C, D. There are 4 options. Okay, so let us try to solve this. तो यहाँ पे let us see, हमारे पास we have been given force is equal to minus eta into A del V by del Z. तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो eta को लिख सकते हैं force divided by this negative can be taken in that direction. Okay, so force divided by A into delta V by delta Z. Okay, so this is what we have. तो eta will be नेगेटिव का कोई डायमेंशन लेना होता नहीं है. सो वी विल हैव टू राइट फोर्स का डायमेंशन. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL(T⁻⁻2) होता है ना. डिवाइडेड बाय एरिया का क्या डायमेंशन होता है? एरिया हैज डायमेंशन ऑफ L² एंड del V by del Z वी हैव. सो इसका एरिया का भी लिख लेते हैं यहाँ L² एंड del V मीन्स L(T⁻⁻1) वेलोसिटी होता है ना. ओके, और बाय del Z, सो दैट इज वन मोर लेंथ वी हैव, है ना. del Z की जगह पे हमने लेंथ का डायमेंशन रख दिया, ठीक है, और del V की जगह पे L(T⁻⁻1) रख लिया. सो वी नीड टू सॉल्व दिस इन ऑर्डर टू गेट द आंसर. सो देखिए ज़रा, यहाँ पे L से L कट जाएगा. ऑलराइट, यहाँ पे L² से एक ये भी कट जाएगा. सो फाइनली हम लोग देखें तो व्हाट डू वी गेट इज m(T⁻⁻2) इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में वी विल गेट L(T⁻⁻1). सो फाइनली व्हाट डू वी गेट इज mL(T⁻⁻1), और ये T⁻⁻1 है, इट विल गो अप, गेट एडेड विथ 10⁻². सो व्हाट डू वी गेट इज T⁻⁻2 + 1 हो जाएगा. सो -2 + 1 विल गिव यू -1. So mL inverse T⁻⁻1 will be the right answer. Alright, so let us see which option is correct. Okay, option D is correct. Alright, so mL inverse T⁻⁻1. Okay, I hope you got this. Okay, now let us consider this question. अगला question. In this question, the frequency of vibration F of a mass m suspended from a spring of spring constant small k is given by relation of type F is equal to cm⁻x k⁻y, where c is dimensionless constant. The values of x and y are. Alright, so it has been asked that there is a mass m which is suspended from a spring. So we have a situation like this. This is the spring and there is a mass m which is being suspended. Spring has spring constant k. So frequency of oscillation for this oscillating mass and spring system, okay, that is given by cm⁻x k⁻y. But we need to find age, what are the values of x and y. Okay, so x और y के values क्या हैं, that's what we are interested.
All right, so how do we do this? Try to have guess. Keep your notebook with you. We have 4 options, option A, B, C, D. So all have different answers. So which one will be correct? Okay, try to have a guess. Okay, so let us solve this question. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फ्रीक्वेंसी का जो इसको डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग कर सकते हैं, राइट? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कैसे करेंगे? वी नो फ्रीक्वेंसी हैज़ डायमेंशन ऑफ व्हाट? t टू द पावर -1, तो इसका डायमेंशन लिख लिया हमने. और c एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सो इट विल नॉट हैव एनी डायमेंशन. बाकी यहाँ पे it is mass, so m to the power x we can write, and k is spring constant. spring constant है, हम जानते हैं कि force is given by minus k into x, so k can be written as what? K will be written as f by minus x. इस minus x को मैंने लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में रख लिया. So what do we get is, if we see dimensionally, k will have dimension of what? Force has dimension of m l t to the power -2, and x has dimension of length. So length get cancelled. What do we get is m t to the power -2. Okay, so this is dimension of spring constant. So spring constant के जगह पे we can write m t to the power -2 and to the power y. All right, so this is what we have. Now what do we need to do? We will have just to combine the same kind of fundamental quantities. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? mass to the power x plus y and t to the power -2y. Alright, and in left hand side what do we get? Mass to the power 0, l to the power 0, t to the power -1. Alright, now what do we do? Dimensional analysis से हम लोग कह सकते हैं क्या कि both side, for the equation to be homogeneous, both powers of fundamental physical quantities on the both hand sides of the equation must be same. All right, so हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? We will have to write it like x plus y. क्या लिख पाएंगे हम लोग? यहाँ पे 0 है मास का पावर लेफ्ट साइड में, so and on the right hand side we have x plus y, so x plus y must be equal to 0, है ना? And also t to the power -2y, so -2y will be equal to -1 from the left hand side. So what do we get is y is equal to, this negative will get cancelled both hand sides, so we'll get y is equal to 1/2. So if y is equal to 1/2, so we can plug in this equation the value of y. So x will be what? -y, यानी कि x will be -half. Alright, so x is equal to -half and y will be equal to +half. So let us check out which option is correct. Okay, x is equal to -half, y is equal to +half. X is equal to -half, y is equal to +half. So which option is correct? Option D is correct. All right.